Namaste, everyone. I'm very happy to see you all. And let's begin today's session with the short prayer. Just close your eyes. Aankhein band kar le. Just bring your awareness on your body and on your breath. Take a long and deep breath in and let go. We'll chant Omkar for 3 times. हम ओमकार का उच्चारण करेंगे 3 बार. ओमकार के लिए एक लंबी और गहरी सांस भरें. We'll chant the prayer. You can repeat after me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Shri Gurave Namaha. Just exhale and bow down. Inhale and come up. Namaste, everyone. I hope you all are doing nicely, practicing whatever we have learned in the last few months. And so this is a very good chance for you to repeat again and again and to enhance your practice of pranayams. Yes, and that is the most needed thing in this COVID time. Yes, are you all agreeing with me? Okay, so let's begin. Let's understand, for those who are just joining for the first time, let's understand the basic anatomy of our lungs. Okay, so I'll be sharing my screen and I'll be guiding you through the presentation. Okay, so let's stay tuned. Okay. Okay, so first of all, let's see what is the basic anatomy of our body. See, God has given a beautiful infrastructure to us, right? And we should know we know everything outside. हम हमारे शरीर को बाहर से बहुत अच्छे से सजाते हैं, है ना? पर कई बार अंदर क्या है हमको कुछ पता ही नहीं होता ना. So this is the best way. Before learning pranayam, हम हमारे शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, तो हमको अगर पता है कि हमारे अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, so we can do it more nicely, है ना? जैसे ही अगर हमारे पास अच्छे से रेसिपी बनानी है हमको, और हमको पता चल जाए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं, तो हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं ना. We can use the ingredients
best way if we know what we have it. Yes. So are you all ready? So let's see how our respiratory system starts. First, we have 11 vital systems in our body. है ना, हमारे शरीर में जो हमारे पूरे बॉडी का ये जो ताम झाम है वो किस तरह से चलता है, तो we have 11 systems from head to toe. उसमें से एक है हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अवयव क्या है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा श्वसन तंत्र स्टार्ट्स फ्रॉम अवर नेजल कैविटी, है ना, हमारा नाक जो है यहाँ से हम सांस लेते हैं और फिर जाके अंदर यू टर्न लेके वो अंदर लंग्स में जाता है ना. सो दिस इज अवर नेजल कैविटी. Then it enters from the paranasal sinuses and nostrils, from the oral cavity, pharynx and larynx, the food pipe and the windpipe. And from the larynx, it goes in the trachea, it becomes a trachea. And these trachea bifurcates in two parts. ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है आगे जाके. और क्योंकि we have two lungs, ना, हमारे पास दो lungs हैं. सो ये जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर है वो अलग अलग ब्रांच में जाके खुलता है अलग अलग लंग्स के अंदर ना. सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का जो हिस्सा है वो अलग अलग दो लंग्स में जाता है, ठीक है. और ये जो दो लंग्स है उसमें भी तीन उसके सेगमेंट्स है. हमारा जो राइट लंग है उसमें तीन अलग अलग लोब्स है, 3 lobes इन द लंग्स. एंड लेफ्ट है वहां पर 2 है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है. सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव 2 lobes इन अवर लेफ्ट लंग्स. यस. एंड लेफ्ट लंग उसके अंदर जाके ये जो ब्रोंकियल ट्री है, आई विल शो यू वन मोर पिक्चर ऑफ ब्रोंकियल ट्री. सी, you can see the structure very nicely here. This is trachea and this is 2 bifurcated portion in 2 lungs. And the tree like structure है ना, जो branches जैसे दिखता है वो bronchial tree है. हाँ, और ये यहाँ पे जो श्वसन नलियां है जहाँ से हम सांस लेते हैं और अंदर जाता है ऑक्सीजन, वो है हमारा bronchial tree. और वहां से पूरा एंड तक का जो पोर्शन है वो है हमारी एल्वियोलाई, है ना. सो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि स्पॉन्जी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो है हमारी एल्वियोलाई, है ना. तो ये है बेसिक हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो रेस्पिरेशन मीन्स क्या, तो सांस लेना और छोड़ना, ये दोनों जो प्रक्रिया है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, राइट. सो इंस्पिरेशन मीन्स व्हाट, बाहर से ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, या. और एक्सपिरेशन मीन्स अंदर से जो टॉक्सिक एयर है वो बाहर फेंकते हैं, वो है एक्सपिरेशन. सो अंदर जाने वाली हवा है ऑक्सीजन और बाहर जाने वाली हवा है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो ये जो गैस का एक्सचेंज है, आना और जाना है, ये यहाँ पर होता है. कहाँ पर, एल्वियोलर लेवल पर. गैस एक्सचेंज हैपेंस एट द सेल्यूलर लेवल एट एल्वियोलाई, है ना. तो ये अगर एल्वियोलाई हमारी ठीक से काम करती है, पूरा स्ट्रेच होके काम करती है, तो हमारी रेस्पिरेटरी जो हमारी श्वसन की कैपेसिटी है वो हाईएस्ट हम यूज कर सकते हैं. और अगर हम पूरी तरह से ब्रीथ नहीं करते और ये एल्वियोलाई अगर पूरी श्रिंक हो गई है तो हमारे रेस्पिरेशन पे बहुत ही उसका असर होता है. और यही बात कोविड सिचुएशन में होती है ना. जो किसी को भी कोविड का इन्फेक्शन लगता है, कोविड वायरस का अटैक होता है, वो सीधा ये एल्वियोलर लेवल पे काम होता है उसका, और एल्वियोलाई श्रिंक हो जाती है. तो पूरी तरह से जो गैस एक्सचेंज है वो हैम्पर हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट अ पेशेंट फील्स ब्रेथलेसनेस. या, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. नाउ व्हाट हैपेंस यूजुअली, है ना, हमारे जो ये 2 लंग्स है उसमें हमने बताया कि राइट लोब जो है उसमें 3 लोब्स है और लेफ्ट लंग में जो है 2 लोब है. और इसी तरह से जो हमारे लंग्स की जो साइज है, आप अमेज हो जाओगे जान के कि हमारे जो फेफड़े की हमको साइज क्या है हमारे अंदर. तो अगर आपने टेनिस कोर्ट देखा होगा, जो टेनिस गेम खेलते हैं,
उसका जो साइज है वैसे ही हमारे लंग्स की साइज है. When we were a child, our respiration was completely fine and it was completely nicely we were doing breathing. But as we grow, this capacity decreases because we don't use our lung capacity at its fullest. Because we don't use it fullest, these lungs get shrinking and shrinking, and they get smaller and smaller as we grow. And let's understand what is respiratory rate normally. No? So 12 to 14 times inhaling and exhaling in 1 minute, it's a normal respiratory rate, right? And now, in many people, it is exaggerated. I mean, like asthma patient or any lung infection, any septic infection, this respiratory rate goes higher. Okay, and when this rate goes higher, we have to bring it down. No, because when we breathe very fast, there is very less chance for gas exchange to happen nicely. है ना, हम सांस लेकर तुरंत ही छोड़ देते हैं तो पूरी तरह से हर एक सेल पे में नहीं जा पाता. So best way is to take a long and deep breaths in and out. है ना, so सबसे पहले हम जान ले. Okay, let me ask you one thing. First question कि आप अभी जब आए ये वर्कशॉप में, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? कुछ भी कर रहे थे. अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में है तो अगर आप सो रहे थे, सोकर उठे हैं, है ना, और जो यहाँ पर इंडिया में है वो लोग अपना रूटीन डे में है. सो जो भी कर रहे हैं, जो भी आपकी रूटीन एक्टिविटीज है, whatever you are doing, one thing is for sure you are doing along with it is breathing. है ना, आप सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर आप एक काम इसके साथ साथ कर ही रहे हैं, वो है आपका श्वसन, आपकी सांसें, जो आपकी सांसें पूरी तरह से इस वक्त में चल रही है ना. और जब हम इस पृथ्वी पर आए, when we were born, just like a small baby, the first action when we came on this planet we did, that was breathe in, right? हमने सांस ली थी और हम रोए थे, है ना. और कई बार हमने देखा है कि जब बच्चा बर्थ लेने के बाद रोता नहीं है तो everyone gets panic, है ना. डॉक्टर भी डर जाते हैं, डॉक्टर भी they try to make that baby cry. You know why? That first cry is the sign of first breathing in, है ना. अगर बच्चा रोता नहीं है, दैट मीन्स कि उसका सांसों की जो प्रक्रिया है वो चालू अभी तक नहीं हुई है ना. तो ये सांस लेना फर्स्ट एक्ट, और जब सांस छोड़ते हैं हम, जब जाएंगे यहाँ से, सो इस सांस लेने और छोड़ने के बीच में हमारा पूरा ये लाइफ टिका हुआ है. और हाउ मच वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट ऑफ दिस ब्रेथ. It's a beautiful fact about this breath. You know, have you wondered any time how your mind, how your breath and emotions are linked? आपने देखा है कई कई बार जब आपको गुस्सा आया तब आपकी सांसें कैसे चल रही थी? एक बार याद करके देखो कि जब आपको बहुत गुस्सा आया था तब आपकी सांसें कैसे चल रही थी? जोर जोर से, है ना. सो फास्ट ब्रीदिंग. और जब आपको किसी चीज की चिंता है या तो आप कुछ तनाव से ग्रस्त हैं तो आपकी सांसें किस तरह से चलती है? हाउ डज योर ब्रेथ मूव्स? इंटरप्टेड ब्रेथ ना. अभी अगर आपको नहीं पता तो आप इसके ऊपर गौर करिए ना. जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, हाउ डज इट मूव व्हेन यू आर विद द डिफरेंट इमोशंस. एंड व्हेन यू आर हैप्पी, very happy, even you barely notice that your breath is moving. That's how every emotion is linked with your breath. Okay, just let's do one practice. Just close your eyes, aankhein band kar le. और एक हल्की सी साधारण सांस भरे. ठीक है, नॉर्मल ब्रेथ इन and breathe out. Take one more long and deep breath in
and breathe out completely. It is slowly you may open your eyes. It is very important to be aware of our breath. You know, at the start of my every session, I ask you to close your eyes and just observe your breath. You know why? Because when we close our eyes and when we observe, bring our awareness to our breath, the harmony happens or the union happens between your mind, body, and breath. And this, when this three dimension, they are coming together, that's the yoga, you know, because most of the time everyone have experienced this, that we are doing something, our mind is somewhere else and breath is moving something else, right? But when we are focusing on our breath, this three dimension comes together, and that is yoga. That's a perfect union happens, and we can be aware at that particular moment that what we are doing. No, हम पूरी तरह से सजग हो जाते हैं जब ये तीनों डायमेंशंस एक हो जाते हैं, और इस सजगता में जो भी कार्य हम करते हैं वो हम 100% करते हैं. Yes, so let's understand more about. Okay, मुझे बताइए कि आप खाना कितना खाते हैं दिन में? Approximately एक अंजलि भर या 2 अंजलि भर? Usually it has been said that अंजलि भर खाना चाहिए, that is 1 अंजलि, but mostly we do 2 अंजलि, or many times in a day. But then too, we eat normally 2 to 2.5 kilogram per day, right? How much we breathe air in? Have you ever wondered? We breathe, gas exchange happens in 24 hours, 12,000 liters. इतनी सारी हवा का हम inhale and exhale करते हैं ना. खाना तो इतने से खाते हैं, पर हमको इतनी सारी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, because our body is made up of cells, है ना. कोशों से बना हुआ हमारा शरीर है, पूरे सर से लेके पांव तक कितने सारे कोश से हमारा शरीर बना है. And you'll be amazed knowing the fact of the numbers, that is more than 37 trillion cells in our body, है ना. ये अगर आप देखोगे तो पूरे पृथ्वी का जो पॉपुलेशन है ना, उससे 4000 गुना ज्यादा हमारे शरीर में कोश है, कोशिकाएं हैं ना. और ये सारी जो तमाम सेल्स है, whatever cells we have, they need 3 things for sure, and that is, one is oxygen, water and moisture, sugar, है ना. एनर्जी चाहिए. No, each and every cell needs oxygen, moisture and sugar. When we don't breathe properly, this whole system goes disturbed. Okay? So by knowing this fact, we should be breathing it nicely and properly. ना, ये anatomical understanding क्यों जरूरी है? So that we, whenever we breathe, we bring these things in our consideration. No. And see, when, what are the things that is in the moment? That is breath. आप कुछ भी करो, आप अगर सो भी रहे फिर भी आपकी breathing चालू है ना. So today in this workshop we will be learning few anatomical pranayams, and they are, first is equal breathing, that is saman breathing. So are you all ready to learn? And those who are repeating the workshop, are you all ready to practice? Okay, so just close your eyes, आंखें बंद कर ले. एक हल्की सी साधारण सांस भरे और छोड़ दे बाहर. One more time. Take a long and deep breath in. एक लंबी गहरी सांस अंदर
और पूरी तरह से बाहर. Now just follow the instructions. Just follow the numbers. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. One last time. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Okay, relax for a while. Just keep taking normal breaths in and out. लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते रहें. We'll do second round of equal breathing. अच्छे से बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं. Sit in a comfortable position in Sukhasana, or if you cannot sit on floor, you can sit on the chair also. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Wonderful. Relax. Take few normal breaths in and out. Just observe the depth of your breath now after equal breathing. Slowly and gradually, you may open your eyes. You know, importance of this equal breathing. Usually when we are breathing, either our inhalation is short or long or our exhalation is short or long, right? हम जब सांस लेते हैं तो या तो हमारी अंदर जाने वाली सांस लंबी या कम होती है, या तो बाहर जाने वाली सांस लंबी या तो कम होती है. पर जब हम इक्वल ब्रीदिंग करते हैं तो हम समान सांस लेते हैं. जितनी देर तक हम सांस को अंदर भरते हैं उतनी ही देर तक हम बाहर भी निकालते हैं ना. सो ये दोनों एक लयबद्ध हो जाते हैं. इट्स अ रिदमिकल ब्रीदिंग, एंड व्हेन यू आर डूइंग रिदमिकल ब्रीदिंग, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर ब्रेन, अफेक्ट योर माइंड. और आप देखोगे कि जैसे ही इक्वल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही अंदर से मन ठहरने लगता है. Your mind starts getting settled down. So that is the purpose of doing equal breathing, and to add depth to your breathing. Okay. So usually हम सांस लेने पर ज्यादा जोर देते हैं कि सांस ज्यादा अच्छे से लेनी चाहिए, but उसको बाहर भी अच्छे से ही निकालनी चाहिए. Yes. Okay. So let's get ready to learn the second pranayam, that is pranayam number 2, and that is intercostal breathing. Okay. So to learn intercostal breathing, first we have to understand what is intercostal space. Okay, so I'll show you one picture here. I'll share. Okay, so can you see this picture? We have a rib cage, right? And in between two ribs, there is a space, and that is called intercostal space. Okay, and now this, whatever the green space in between the ribs you can see is intercostal space. Okay, what is the significance of learning intercostal breathing? Okay, so when we learn intercostal breathing, we are stretching our lung capacity to its fullest. Okay,
And by stretching those lungs, we are stretching alveolar walls also. And we have 6,000 alveoli per lungs. Okay. So if we do this intercostal breathing very nicely, we can enhance our lung capacity to its fullest and to its maximum. Okay. So let's learn intercostal breathing. For learning intercostal breathing, just sit back, relax, and keep your spine straight. है ना, हमारी जो रील की हड्डी है उसको सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दे, roll back your shoulders and just relax your shoulders, right? Then your 4 fingers in front of your lower portion of the chest and thumb at the back. And now, when you start breathing, first take a normal breath in and breathe out. See, when you breathe in normally, you can feel your expansion. Something is expanding. And when you exhale, something is shrinking. Okay. So when we do intercostal breathing, we see that expansion is happening laterally and yes. So we will do this intercostal breathing with now breath count. So get ready. Inhale, 2, 3, 4. Expand your lung. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. And relax. Bring your palms in your lap, open to the ceiling, and just observe your normal breath. लंबी गहरी सांसें लेते रहें. Get ready for second round of equal intercostal breathing. Place your 4 fingers in front and thumb at the back. And when you inhale, just feel the expansion of your chest also. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. And relax. Relax your shoulders. Relax your face. And keep breathing normally. And observe the difference in your chest. Slowly and gradually, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं. Okay, so was it good? Yes? Okay, so let's do some shoulder rotation. So bring your palms on your shoulders and do inhaling, take your shoulders up, clockwise rotation of your shoulders. Okay, while doing shoulder rotation, we are actually opening the chest. Okay, and most of the time, how we are sitting, we just sit and hunch, right? We are being aware of our spine, whether it is straight or not, है ना. बहुत कम समय तक दिन में हमको ये जागरूकता होती है कि हमारी स्पाइन जो है, रील की हड्डी है, वो सीधी है या नहीं ना. और हम इस तरह से बैठते हैं. अगर टीवी भी देखते हैं तो ऐसे बैठते हैं, और या तो सोफे पे लेट के बैठते हैं, या तो पूरी तरह से लीन बैक करके बैठते हैं. तो पूरी स्पाइन की तो हम ऐसी की तैसी कर देते हैं, and spine is the backbone, and really it is very, very important
for our all over the health. When we this practice is habit, that keeping our spine straight and rolling our shoulders back, so we are opening our chest actually, and we are allowing our lungs to expand more and inhale and exhale properly. Okay, so whenever in the daytime also, when you're doing something, your work, or just sitting aside, just roll your shoulders back, 2-3 times, keeping your spine straight, and then breathe, inhale and exhale normally. Okay, wonderful. So let's learn third pranayama of today, that is pranayama number 3, and that is we will learn clavicular breathing. Okay, so I'll show you. You all must be aware of clavicle. What is clavicle? Those who are not aware, just you can stretch your one hand, your right hand, and place it near the upper portion of your chest. You can feel the bony prominence, and that strong prominent bone is your clavicle, or we can say collarbone. So when we say this collarbone, so you must be wondering that what is the role of this clavicle in the respiration. Yes, it has a very, very important role in respiration. We have, as I said before, we have 3 lobes, and when we just inhale and exhale not properly, the upper lobe of the lung is just remaining aside, just like that, without being cleared out with the toxic stale air. By doing clavicular breathing, we will stretch our breath up to the collarbone, right? So when we stretch our breath that much, we are allowing that toxic air, जो हमने पहले से सांस ली है और छोड़ी नहीं है बराबर, So by doing clavicular breathing, we are enhancing that expiration, exhalation more. And what is the significance? जब हम सांस को इस तरह से पूरी तरह से बाहर करते हैं, so we are making room for the new air. जब हम पूरी तरह से ऊपर का हिस्सा है जो वो साफ कर देते हैं, तो उसके हम नई एयर के लिए, नई प्राण वायु के लिए जगह बनाते हैं. और जैसे हम जगह इस तरह से बनाते हैं, तो हम ज्यादा एयर अंदर ले सकते हैं. And when we don't breathe properly, this stale air remain in the upper lobe or the collarbone area, and that becomes the reason for the next infection to come in. जब ये ऊपर का हिस्सा साफ पूरी तरह से नहीं होता, तो क्या हो जाता है? Any bacterial viral infection we get easily. आराम से हम infected हो जाते हैं, and that affects our immunity also. Okay, so let's learn clavicular breathing. And for clavicular breathing, once again, you have to sit with spine straight, relaxing your shoulders, roll your shoulders back, and your 4 fingers in front of your shoulders and thumb at the back. Okay, we are not constricting our shoulders. See, this is how we are not doing. We are just relaxing our shoulders. Shoulders are away from ears. Okay, and then slowly we are putting our 4 fingers in front and thumb at the back. Yes, and now just focus when you breathe in, where our attention should be, from the lower portion of the chest, then middle, and then up. Okay, so from the lower end of the chest, then abdomen. First is abdominal muscles, then thoracic muscles, and then clavicular muscles. Okay, so let's get ready. Close your eyes, आंखें बंद कर ले. एक साधारण सांस भरे और छोड़ दे बाहर. एक लंबी और गहरी सांस अंदर. Take a long and deep breath in and breathe out completely. And let's get ready for a clavicular breathing. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Raise a little bit. Inhale little more. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. One more time. When you feel that you have taken enough air, after that also you have to stretch a little bit more, and you have to raise that air up to collarbone. Okay, one more time.
Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Raise a little bit more. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. One more time. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. One last time. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. And relax. Put your palms open in your lap. Keep breathing normally and feel the difference in the upper area of your chest. Observe the difference. Slowly and gradually, you may open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं. Okay. Was it good? Could you do it nicely? Okay. So this is very important when we clean our upper lobes also. Yeah. So let's learn some. When we were talking about emotions and our breath and our mind, it's really linked. And when you want to really address your stress level, most of the time, जब हम तनाव से भर जाते हैं ना, तो कहाँ पर ये स्ट्रेस भर जाता है? This shoulders. ये shoulder जो हमारे कंधे हैं, this is the most likely area where all the stress gets just stuck here. So best way to release this stress is to move this. Okay. So what we are going to do now, just sit with straight spine. दिल की हड्डी को सीधा रख दे, कंधों को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दे, और हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब सांस को भरेंगे पूरी तरह से अंदर, पकड़ के रखेंगे और कंधों को ऊपर नीचे करेंगे. And then one more time, take a long and deep breath in. Hold your breath and move your shoulders up and down. One last time. Take a long and deep breath in. Raise your shoulders. Move your shoulders. What a relief. Yes. Along with the breath, when you move your shoulders, when you breathe in and hold, and then when you move your shoulders, you are releasing all the stress. This is a wonderful exercise. You should repeat it, those who are working all day, and when they are in too much of stress, this exercise is, it takes no time. Within few seconds, you are just out of your stress levels. Okay. So this is how your breath plays a very, very important role. Okay, just close your eyes, आंखें बंद कर ले और पूरी तरह से अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए. Keep breathing long and deep. You must be observing that within few minutes of these very simple pranayama techniques, your mind has started getting relaxed
more and more. आप देख सकते हैं आपकी थोड़ी सी ही अपनी सांसों पर ध्यान ले जाने से और सिंपल प्राणायाम्स की प्रैक्टिस करने से आपका मन ठहरने लगा है. And your respiration is also enhanced and very, very normal and in harmony. And that's what is most needed. With the next transition breath, slowly and gradually, you may open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं. Okay. So today, you have to practice. We will have homework every day. So today you are going to practice all this pranayam, what we have learned. There is equal breathing, intercostal breathing, and clavicular breathing. And chant Omkar. You know, when we chant Om, it has nothing to do with any religion. You know, Om is a universal sound. You know, many a times just sit like this, sit like that, doing nothing. है ना, कुछ भी किए बिना आप ऐसे ही बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें और आप देख सकोगे कि कोई एक पर्टिकुलर एक साउंड है जो गूंज रहा है ना, एक यूनिवर्स में एक साउंड है जो गूंज रहा है एंड दैट इज वेरी मच रिजेंबलिंग टू ओम, यू नो. एंड व्हेन वी चैंट ओम, our all chakras are coming in the harmony, you know, and whole system is getting balanced, you know. So let's practice Om, and it is made of 3 स्वर, है ना, 3 स्वरों से बना है ओम. वो है आ, u and ma. Okay, so let's chant first a. Just sit back and relax. Place your palms in your lap. Close your eyes. And now slowly bring your right palm on your navel region. अपने राइट हैंड को अपनी नाभि के ऊपर रख दे और लेफ्ट हैंड को खुला ही छोड़ दे. एक साधारण सांस भरे और छोड़ दे बाहर. और अब हम आ स्वर का उच्चारण करेंगे. And just feel where the vibrations you feel. Just observe where do you get the vibrations when you say A. Okay, inhale. A. Just observe where is the energy you feel. It's in the navel region. Yes. So when we chant A, the Nabhi chakra is getting stimulated and activated. You know, hamara Manipur chakra. Okay. Now we'll chant U. So place your right palm on your chest area, at your heart region, at your Anahat chakra. Just close your eyes, आंखें बंद कर ले. Take a long and deep breath in, लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ते हुए हम ओ. You will notice vibrations in your chest area. That is your heart and lungs, most vital organs of your body. When you say "oo," your Anahat chakra is getting balanced and activated. Now last, place your right palm on your throat and we'll say, we'll lip sync, you know,
just like a humming sound will make. Okay? Just take a long and deep breath in and make a sound. And place your palm between your eyebrows. Slowly, both palms in your lap, and feel your breath. पूरी तरह से अपना सांसों पर ध्यान लेकर आए. And now we will chant Omkar for 3 times. Take a long and deep breath. Om. 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 Relax and let go. Observe the difference in your consciousness right this moment. इस वक्त चेतना के स्तर पर जो भी बदलाव हो रहा है उसे महसूस करें. And once again, place your right palm on your navel region. And now, just follow the instruction. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Push your stomach out. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. This is called diaphragmatic breathing, pranayam number 4. This pranayam is very, very important and very, very powerful. So those who are having high blood pressure, this is the best pranayam. But there are some contraindications. Those who are having any problems related to abdomen, means recent operation, hernia, peptic ulcer, or pregnancy, they should not do this pranayam. Rest all can practice this pranayam and just reap the benefits of doing this. Once again, inhale. While inhaling, push your stomach out as much as possible. And when you exhale, pull your stomach in towards your spine. Okay? Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Push your stomach out. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. One more time. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. And release, relax. आराम से बैठ जाए. Just observe your breath.
slowly and gradually become aware of your body and surrounding. अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं. With a beautiful smile, you may open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं. So this was about diaphragmatic breathing. Okay, so let's see what is diaphragm. Okay, we will discuss more about diaphragm tomorrow, but just have a slight understanding what this diaphragm is. Diaphragm is a muscle, you know, it's a dome-shaped muscle. You can place your both hands just like this. And this dome-shaped muscle is situated just in between your thorax and abdomen. वो छाती और पेट को अलग करने वाला एक dome-shaped muscle है. And how does it move? No, जब हम सांस लेते हैं तो ये मसल यूजुअली इस तरह से होता है, और जब हम सांस भरते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है. जब सांस छोड़ते हैं तो ऊपर आ जाता है. Okay, you can make the movement just like this. The movement is very, very important. You know, when this muscle, when we inhale, it gets flattened. No? तो वो जब flat हो जाता है तो lungs को stretch करके उसके लिए जगह बनाता है ना. It increases the space inside your lungs when this diaphragm gets flattened, and when we exhale, it goes up, yeah? And it pushes lungs upward. ना वो फेफड़ों को ऊपर की तरफ पुश करता है, so that we exhale more and more toxic air out. Okay, so this is the function of this diaphragmatic muscle. No, and by doing this muscle, this is a constant motion. You know, this constant motion, it keeps happening, and this gives the massage, nice massage to your all the chest and abdominal organs. You know, so it enhances your lymphatic system also. You know, when it goes up, it massages your lungs and heart and areas, and when it goes flattened, it massages your stomach, liver, pancreas, all those muscles of the abdomen gets massaged. Okay, so this is how, you know. And when we hunch and when we don't sit properly, so जैसे एक छोटे से रूम में अगर आपने 100 लोगों को भर दिया है, so how they feel? Suffocated, right? There is no breathing space. So this is how it happens when we hunch and don't sit properly, and when we don't allow that space to stretch out. Okay, so that's why sitting posture is very important, with the spine straight, with the रील की हड्डी को सीधा रख के बैठना, shoulders को roll back करना बहुत ही जरूरी है, so that this diaphragmatic muscle this movement happens nicely, and all the important organs, they get massaged nicely. And one more function of diaphragm, you know what? It's in our body, it is inbuilt system, flight and fight response. You know, कि या तो भाग जाओ या तो फाइट करो, है ना. कि अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए हमारी लाइफ में, कि जहाँ पे पूरा तनाव से अगर मन भर गया है, कुछ भी आपको से फॉर एग्जांपल यू हैव टू परफॉर्म फॉर द इंटरव्यू, और यू हैव टू एड्रेस द लाइव ऑडियंस, बहुत सारे लोगों को एड्रेस करना है, या तो कुछ आपको इम्पोर्टेंट कुछ टास्क करना है और आप टेंशन में आ जाते हैं, यू नो. सो बटरफ्लाई फीलिंग्स आना शुरू होता है, आपकी सांसें फूल जाती है, आपकी धड़कनें बढ़ जाती है, यू नो. सो दिस इज द इनबिल्ट रिस्पॉन्स ऑफ योर sympathetic nervous system, you know. And to reverse of this calm and steady response is parasympathetic response, you know. Calm and relaxed response or flight and fight response, you know. ये दो तरह से हमारे अंदर की responses है जो हमारी autonomous nervous system में से काम करती है. ये बहुत जरूरी है. अगर ये reflexes नहीं है
तो हम कुछ अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाते, है ना। से फॉर एग्जांपल आपके सामने शेर खड़ा है, आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने से शेर आ गया, और अगर आपको पता ही नहीं है क्या करना, आप खड़े हैं ऐसे ही, अगर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स नहीं है तो आप वहीं पर खड़े रहोगे और वहां शेर आके आपको खा जाएगा. But because of the sympathetic response, you will just run away and you will keep yourself safe. No? So this is the very important organ, that is diaphragm. It supports your parasympathetic nervous system, and it creates lots of calm and relaxed response to your body. And when your nervous system is calm and relaxed, it allows you to meditate and to go in the deeper state of your relaxing mind. Okay, so this was about diaphragmatic breathing. And so we have learned today equal breathing, intercostal breathing, clavicular breathing, and diaphragmatic breathing. So just keep practicing for at least 5 rounds of each when you come for the next session. So, and you have any question related to this pranayams, you can ask me now. We will have 5 more minutes for this question answer. So I'll just see what you have. If you have any question, yeah, you can ask me now. Are you all enjoying? Every time I'm taking this workshop for the 13th month this time, but I have noticed that nothing is same. Every time it goes, something flows very nicely, something new comes up. So it is always better, I would advise everyone to repeat whenever it is possible. And, keep practicing by watching my video again and again, so that you will be mastering the pranayams. And when you have mastery over your pranayams, you'll be very easy for you to go in the meditations. Okay, Dr. Bimal Bhatt is asking how the breath works for cool mind. So as I said, you have to increase the parasympathetic response. There we have 2 nervous system, that is central nervous system and autonomous nervous system. You are a doctor, so you must be knowing it. And in autonomous nervous system, we have 2 reflexes, that is sympathetic and parasympathetic. So when this sympathetic response comes, it's a fight response. Whenever the stressful situation comes, this sympathetic response comes. When your breath moves fast, when your heart rate goes fast, you start sweating, and to cool down, the opposite of these, when you do diaphragmatic breathing, it relaxes your mind and it enhances your parasympathetic response. It relaxes you so much and it cools your mind so much. Okay, anyone? Any questions? I think I have cleared everything during the pranayams, but if still you have any question for these pranayams, you can definitely ask me tomorrow also. So don't hesitate to ask any questions. Okay, everyone. So see you all tomorrow. Till that time, keep practicing. Namaste. Stay safe and happy. Keep smiling. Bye-bye.